Good morning, dear all. Hope you all are fine. Let us start with synthetic rubber. So, what is synthetic rubber? It is a man-made vulcanizable rubber, like polymer is called synthetic rubber, and synthetic rubber are either the homopolymers of 1,3-butadiene derivatives of copolymer of 1,3-butadiene or its derivative with unsaturated monomer. Typical synthetic rubbers are described below. Neoprene. Okay, this is one of the monomer unit, which is a part of synthetic rubber. It was first synthetic rubber was first manufactured on a large scale, and neoprene is prepared by the chloropropene in the presence of catalyst called as benzoyl peroxide at 60 degree to 80 degree centigrade, and the monomer chloropropene is obtained by the reaction of HCl with vinyl acetylene. Let us see the reaction. That is, this is this is vinyl acetylene with hydrogen chloride, giving rise to a chloropropene unit. And this chloropropene unit undergo number of monomers. This monomer undergoes to give rise to neoprene. So, what is the other name of neoprene? That is polychloropropene. Now, neoprene is a particularly resistant to chemical action, and it is used in the manufacture of containers for corrosive chemicals and hoses of petrol and oil. Okay, this is used as a corrosive chemicals. Let us see. Now we will switch to, as I have already told you, that there are so many synthetic rubbers under which we have studies chloropropene, styrene butadiene, and so many such examples. So we are going to see styrene butadiene, that is Buna-S rubber, which is the full form is, short form is SBR, and it is called as Buna-S. Okay, so in this we are going to see introduction, molecular formula, production, types of SBR, Buna-S के बारे में बताएंगे, and then पढ़ेंगे and properties of SBR, उसके applications. Okay, let us start. What is Buna-S rubber? So Buna-S rubber, it is a copolymer prepared from styrene. Now see, students, you see the reaction, that is styrene. Between the reaction of styrene, that is the monomer styrene is converted added with the monomer n number of 1,3-butadiene at about 47 degree using potassium persulfate as an initiator. Okay, and it is called as styrene butadiene rubber, that is SBNR, which is also called as Buna-S rubber. Buna has its major use in making tires, shoe soles and inside wall of building. Okay, कहाँ पे use होता है? Tires में, shoe soles में और inside the wall of building. Let us see the formula for Buna-S rubber. So this is how the linkage is happening. This polymer has happened. That is, the styrene is reacted with 1,3-butadiene. This is the benzene ring, if you see, and this is 1,3-butadiene linkage. Okay, in this way these are connected. Styrene butadiene or Buna-S describes family from synthetic rubber derived from styrene and butadiene. This material have good abrasion resistance and good aging stability when protected by additives. रेजिस्टेंस एबिलिटी बहुत ज़्यादा है Buna-S में, इसलिए टफ रहता है, सो इसीलिए वो टायर्स में यूज होता है. ओके, रेजिस्टिविटी, इट्स वेरी रेजिस्टेंट टू हीट, केमिकल्स एंड एक्सेट्रा. Styrene butadiene ratio influence the properties of polymers with high styrene content. The rubbers are harder and less rubbery. ठीक है,
रबर या नहीं, जो हम रबर मटेरियल बोलते हैं, रबर बोलने से हमको थोड़ा सा इलास्टिक फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये जो बुना एस रबर है इट्स वेरी वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्डर. Now let us see how the types of SBR are. SBR, styrene butadiene rubber, is derived from two monomers, styrene and butadiene, and the mixture of these monomers are polymerized by basically different, दो मेथड से बनते हैं. एक है इमल्शन पॉलीमराइजेशन, दूसरा है सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन. So emulsion polymerization is initiated by free radical and solution polymerization of SBR is produced by anionic polymerization. एक तो इसका स्लरी तैयार होता है इमल्शन, और इसके क्या आयन एक्सचेंज जो होते हैं, जैसे स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन है तो उसके जो भी आयंस होंगे उस टाइप के आयंस का पॉलीमराइजेशन होके एनायनिक पॉलीमराइजेशन होता है. ओके, आई मीन जैसे नेगेटिव आयंस है, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के लिंकेज से बनाया जाता है, उसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो आयन एक्सचेंज मेथड में यूज होता है, ये प्रोसीजर होती है, एंड उसको इसलिए बोलते हैं सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन. इमल्शन यानी स्लरी, सो इनिशिएटर इज डिफरेंट, हियर वी यूज फ्री रेडिकल्स, ओके, लाइक बेंजोइल peroxide. So many such type of free radical initiators are there. I am giving the example of benzoyl peroxide. Okay. Now let us see Bunai. The material was initially marketed with the brand name Bunai, and its name derives from Bu for butadiene and Na for sodium. That is the natrium in several languages including Latin germ, and S for styrene. Okay, so Bu for butadiene, N for that is sodium, क्योंकि ये सोडियम से बनता है. इन दोनों का जो है ब्यूटा 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन किससे बनता है? सोडियम से बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम as a initiator, and that's why Bu starts for N, Na starts for sodium, and S starts for styrene. So, इस प्रकार उसका नाम दिया गया है. एप्लीकेशन बात किए तो द एलास्टोमर इज वाइडली यूज्ड इन न्यूमेटिक टायर्स, जो कि टफ टायर्स होते हैं व्हीकल्स में वगैरह, शू हील्स, गैस गेट्स, एंड इवन चिविंग गम. ओ माय गॉड, सो देखो चिविंग गम में भी पॉलीमर यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स डोंट यूज दैट च्युइंग गम, ओके, दैट इज वेरी डेंजरस. सी, यू आर जस्ट intaking the polymer in your body, so it's not good. So remember that it is commodity material which competes with natural rubber. Latex emulsion SBR is extensively used in coated papers, being one of the most cost-effective resins to bind pigmented coatings. It is also used in building applications as a sealing and binding agent behind the renders as an alternative PVA, that is polyvinyl alcohol, but it is more expensive. ठीक है. लैटेक्स SBR is extensively used in coating material में भी यूज होता है. तो कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है बच्चों? न्यूमेटिक टायर्स में होते हैं, अपने जो बड़े बड़े व्हीकल्स रहते हैं उसमें है, फिर शू हील्स में है, गैस गेट्स में है, फिर इट इज़ यूज इन कमोडिटी मटेरियल विच कॉम्पिट्स विथ नेचुरल. commodity material yani it's related to household. Latex SBR is extensively in coated paper. It is also used in building applications also. Building application में भी use होता है as behind the renders as an alternative to PVA. अभी PVA के जगह ये बिल्डिंग एप्लीकेशन मैंने कंस्ट्रक्शन के काम में भी ये जो बुनास है इसको यूज करते हैं, क्योंकि पॉलीविनाइल अल्कोहल जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है. इसके कारण ही हम लोग दैट इज बुना दैट इज SBR लेते हैं. ओके, बुना इस प्रकार, ठीक है. फर्दर, ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर synthetic rubber. In the next video, we are going to see about vulcanization, and it's a very short topic. Okay. So, thank you, dear ones. What we studied about the synthetic rubber. What is synthetic? उसके examples, उसके क्लोरोप्रीन units देखा कैसे बनता है उसका. Okay. क्लोरोप्रीन जो unit है
कैसे बनता है हमने देखा, विनाइल एसिटीन, एसिटिलीन और हाइड्रोक्लोराइड से बनता है, ठीक है। उसके बाद वो मोनोमर पॉलीमराइज्ड होके पॉलीमर बनता है। उसके बाद हमने बुनायस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2.5 मार्क के लिए यूज होता है। उसको क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट बुनायस रबर और SBR। सो व्हाट इज वाई द नेम, कहाँ से बुनायस नाम क्यों पड़ा, किससे बना, स्टाइरिन से बना, 1,3-ब्यूटाडाइन से बना, फिर मोनोमर बना, फिर पॉलीमर बना, उसके एप्लीकेशंस कहाँ पे है। So we have just taken the example and we have just shown the importance of Bunayas, where it has been obtained, why the name called as Bunayas rubber is there, and what is the alternative name for Bunayas, and the applications of Bunayas. So here we complete a synthetic rubber under which we have studied neoprene and Bunayas. In the next video we are going to see about the vulcanization. Thank you. Have a nice day.